तो आप लोग तैयार रहिए। आज हमने जो पाइथन की क्लास ली थी, आपको याद होगा, अभी ठीक कुछ समय पहले मॉर्निंग में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जिससे कि अगली क्लास भी बेहतर तरीके से संचालन हो सके। और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी क्लास हम ऑनलाइन लेते हैं लाइव। तो जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए इस लाइव सेशन में, क्योंकि लाइव क्लास में लेने से आपका जो भी लाइव क्वेश्चंस रहता है, इस लाइव चैट सुपर चैट से हम आपको जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन में हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लेक्चर था मॉड्यूल और पैकेज, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है, मॉड्यूल और पैकेज, इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो मॉड्यूल और पैकेज इन पाइथन। ठीक है, तो जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। हमें लगता है वॉइस के लिए थोड़ा सा जी अब आवाज़ आई होगी। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके बारे में आप इसको समझने का प्रयास करिए कि जो मॉड्यूल एंड पैकेज इन पाइथन learning objective, by the end of this lecture a student will be able to understand what modules and package are important built in Python modules, create their own modules, use different important statements, understand Python package and their structures, installed third-party package using PIP, build module Python applications. Now, hello everyone. This lecture, welcome back to our programming Python programming series. In this previous lecture, we learned about functions which help us write reusable codes. Now imagine you have written hundreds or even thousands of functions, keeping all of them in a single files. Would like you code difficult, manage, and this is where module package come into play. Now module and package help us organize our code into smaller reusable and maintainable components. By the end of this lecture, you will understand how powerful Python developers structure large projects. So what is module? A module is simply a Python file.py. This is the module that contains function, variables, classes, or executable code. Like examples, calculator.py, this file itself is a module. This file itself is a module. Okay, now why use module? Now why use module? Module help us reuse code. Module help us reuse code, organize programs, reduce duplications, improve readability, make debugging easier. Without modules, large projects become difficult to maintain. And now built-in module. Python comes with many ready-to-use modules. Some popular are ones, modules and purpose. Math comes मॉड्यूल फर्स्ट में। अंजलि सोनी जी हेलो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें लाइव चैट पर हमसे पूछ सकती हैं अंजलि जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप
ठीक है अंजनी जी, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो मॉड्यूल्स के पर्पज दोनों हम समझेंगे। तो मैथ्स मॉड्यूल में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करता है और रैंडम्स जनरेट रैंडम वैल्यूज एंड डिटरमाइंस में वर्क विद कोड एंड टाइम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस and Python integrated information systems and statistical calculation. Now important of modules. Python comes with many ready to use modules. Some popular ones are like maths, random, determinants. तो सिंटैक्स देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स, सिंटैक्स इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स में फर्स्ट सिंटैक्स मॉड्यूल्स एग्जांपल्स, इम्पॉर्टेंट मैथ्स, प्रिंट मैथ डॉट एस क्यू आर टी 25, तो आउटपुट 5.0। तो यूजिंग मल्टीपल फंक्शन। लो मुकेश जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। कोई भी आपको चैट है, कोई क्वेश्चन है तो आप इस लाइव सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगला लेक्चर भी आपको इस लाइव में मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइव चैट। यूजिंग मल्टीपल फंक्शंस लाइक पाइथन, जैसे इम्पॉर्टेंट मैथ्स के जो इम्पोर्ट मैथ्स, तो प्रिंट मैथ्स डॉट फैक्टोरियल 5 एंड प्रिंट मैथ डॉट पी आई। तो प्रिंट मैथ सेल्स 5,3 या 5.3 ले लीजिए आप। तो प्रिंट मैथ्स डॉट फ्लोर्स एंड 5.9। तो आउटपुट क्या आपका आने वाला है? 123.141592 एंड 6 एंड 5। इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इंटरेस्टेड in importing everything from path mathematics, from math import squared, print sqrt 64, output is 8.0। तो important multiple functions are used in from maths import sqrt factorials। okay, तो प्रिंट sqrt 49 एंड प्रिंट फैक्टोरियल 6। तो इम्पोर्ट डेटा एंड एलाइज, तो इम्पोर्ट मैथ्स एज m, प्रिंट m डॉट स्क्वायर 81, आउटपुट 9.0। एलाइज मेक कोड सॉर्टर्स, import everything not recommended, import everything not recommended from math imports. Now you can write Python print sqrt 16 instead of Python maths.sqrt 16. Avoid this in large project become it can create naming conflicts. Okay. Now random modules create generate random numbers, import randoms, print randoms dot radiant 1,10. Possible outputs is 7 and random choice is the programs. Import randoms, fruit is equal to apple, banana, mango, print क्या होगा? प्रिंट होगा random dot choice fruits। तो possible outputs is banana। Now determine modules to now determined modules import determines, today determines dot determines dot now। तो print today। now possible output is that 2026 7 26 9.30 11.42। तो now current date in Python imports determines, print determine dot date and today। now OS module interact
with the operating system, interact with the operating system. Python's print OS gateway and output current working directory list files Python import as print OS list dir. Now creating your own modules. Create files like a calculator.py. This is the modules. Okay. And now while write the programs, def adds a comma b, return a plus b, def subtract a comma b, return a minus b. Now create another files main.py, Python import calculators and print calculators.add 10 comma 20, output is 30. Import specific functions from calculator import add, print add 50 comma 30, output is 80. Module search path. Now module search path is Python search module in first current folders, second standard libraries, and third installed package. Now you can see the search path using import systems print system.path. Now what is a package? A package is a collection of related module organized in directories. For examples, school, init.py, student.py, teacher.py, result.py. These are the modules of package. Import from package from Python. From school import students, or from school.student import display. Now third party package. Python also allow installing a package created by the community. Examples: NumPy, Pandas, Matplot library, and requests, Flask, Django. Now install using pip installs NumPy. Check installed package, pip list. Pip installed upgrade NumPy. Now uninstall a package, pip uninstall NumPy. Now the practical examples. Random password generator is there. Practical examples. Import randoms, import strings. Now character is equal to string dot ASCII dash letters plus string DIGITS digits. Password is equal to invert commas, and for I in range 8, password plus is equal to random choice characters, print passwords. Okay. Your session area and circuit, practical your examples, and practice your quiz area question. Common mistakes forgetting to import. तो प्रिंट मैथ स्क्वायर 16, इंपोर्ट मैथ्स होना चाहिए तो प्रिंट मैथ स्क्वायर 16 होना चाहिए. रॉन्ग नेम्स इंपोर्ट मैथ तो इंपोर्ट मैथ्स. ठीक है, मैथ्स नहीं मैथ होना चाहिए. ये सर्कुलर इंपोर्ट्स जो होते हैं उनके बारे में. अवॉइड इंपोर्टिंग टू मॉड्यूल्स इनटू ईच अदर्स एज इट्स कैन causes error. Now interview questions are started. What is a modules? तो a Python file containing reusable code is a module. What is a package? A directly containing related Python modules is a package. Difference between module and package.
So single.py file is a modules and package is a collection of modules. Contains function and like classes, organize multiple modules. Now question fourth is difference between import module and from module import functions. तो import module import with whole modules and from module import functions import only the specific function. Now what is PIP? What is PIP? PIP is Python package manage used to install, upgrade and remove third party packages. Practice questions, imports the math module and calculate the square root and 144. Generate 10 random numbers between 1 to 1 and 100 and display the current date and times. Create a custom module with multiplication and division functions and create a package named library and modules books.py and members.py. Now sixth question is installed the request package using PIP. Next question, write a program that generate a random 10 character passwords. And next question, print all installed Python package using PIP list. Now today we learned about this lecture. And first, what is a module? Build in a module, import statement, alias, customs modules, package, third party package, PIP commands, practical examples and mini projects. Now all student create a student utility package with the following structure. First, student apps, student फ्लो चार्ट आप समझिए इसमें स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी, मार्क्स, अटेंडेंस, ग्रेड्स एंड मेन डॉट पी वाई का जो फंक्शन बनने वाला, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स इसमें 4 पार्ट्स के पढ़ेंगे। पहला है मार्क्स डॉट पी वाई मॉड्यूल्स एंड दूसरा है अटेंडेंस डॉट पी वाई। मार्क्स डॉट पी वाई शुड कैलकुलेट टोटल द एवरेज मार्क्स and second attendance.py should calculate attendance package and third grades.py should assign grades based on marks. Main.py import should import these modules and display complete student reports. Now today lecture are रिक्वायरमेंट्स जो दिखने वाले थे, हमने 4 मॉड्यूल्स के बारे में आपको बता दिए हैं। तो अब आप लोग जो भी नए आए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइव चैट पे जैसे देखिए अंजलि सोनी जी ने मैसेज किया है और मुकेश जी ने मैसेज किया है। तो जो भी लाइव चैट्स में आप आते हैं तो कम से कम आप सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन पूछें हमसे। आपको लिए हम बैठे हैं, आप जितना अधिक क्वेश्चन पूछेंगे आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू।